Hi students, it is Sibu Sir this side for VSI, and in the third video for experimental skills we'll see simple pendulum, damped oscillation of simple pendulum. So let us see what is the theory behind this damped oscillation of simple pendulum. What is the meaning of this damped oscillation? Why this damping is taking place of simple pendulum? Okay. So in the damped oscillation of simple pendulum, there are two types of force involved in the oscillation of pendulum. One is the restoring force, another is the damping force. So there are two forces, one we can say restoring force and the other is damping force. These two forces together is the reason for acceleration of the simple pendulum bob. So we can say that F restoring plus F damping is equal to mass into acceleration. So restoring force is always in the nature of minus kx, and damping force is proportional to velocity of the simple pendulum, that velocity of the simple pendulum. So you can see that it is B into V and is equal to MA. Why we put minus sign? Because of the damping reason, okay? Because damping force is always in the opposite direction of motion of the pendulum, and also it is proportional to velocity of the pendulum. So we can say minus of kx minus b into dx by dt, which is velocity, is equal to mass into d square x by dt square, correct? And on rearranging it, you can say that m into d square x by dt square plus b into dx by dt plus kx is equal to 0. Dividing with mass, you are getting a differential expression as d square x by dt square plus b by m into dx by dt plus k by m into x is equal to 0. This expression will give you the differential expression for damped oscillation. And we are not going for the solution of this differential expression. Instead, I am directly going for the amplitude expression. You can say that amplitude of this oscillation will be damped, which means the amplitude is exponentially decreasing with time. So we can write down the expression as A0 e to the power minus gamma t, where gamma is a constant which is given by b by 2m, and obviously I am not going into the derivation of that one. Instead, you can just understand that amplitude is exponentially decreasing with time. What is about the energy of the oscillator? Energy of the oscillator is nothing but, if you are writing it as E, half k a square, right? So the energy can be explained as, can be written as half k a naught square e to the power minus 2 gamma times t, right? Which means it is E is equal to E naught into e to the power minus twice gamma t. So energy of the oscillator is also decreasing exponentially. So if you are plotting a graph for amplitude as well as energy, first of all I am drawing a graph for amplitude versus time, which decreases exponentially with time, okay? And if you go for energy also, the same thing happens, but उसमें power different था. That is the only thing, right? With time, energy also decreases exponentially with time. Energy also decreases exponentially with time. So in the simple pendulum experiment, to determine this nature of variation, we are plotting a graph of a square versus time in the experiment. So what we are doing is nothing but a square versus, क्योंकि energy proportional to a square है ना, तो a square versus time graph is plotted in the experiment.
So what is the experimental setup? Obviously the graph is going to be exponentially decreasing only because वो एनर्जी का ही ग्राफ है. हाफ के ए स्क्वायर का वेरिएशन ऑब्वियसली था ये, इसमें हाफ के हट के बाकी ए स्क्वायर का वेरिएशन तुम्हें मिलेगा. तो एक्सपोनेंशियल एक वेरिएशन ही तुम्हें प्रूव करना है. What is the experimental setup that I am telling you here? The experimental setup is, you can see that a wall, okay, wall के ऊपर there is some, what we say, a rod is attached to the wall, something is connected with the wall. On that rod you can attach a simple pendulum, okay, of 1 meter length. What we are discussing here is a seconds pendulum. What we are discussing here is a seconds pendulum, and that seconds pendulum has 2 seconds as a time period. So each side में जाने में 1 second लगता होगा उस simple pendulum को. Such a simple pendulum is connected to wall and is oscillating parallel to the wall, and on this wall there is a meter scale attached. So I am drawing that setup. So simple pendulum is oscillating on this wall, matlab it won't touch the wall, it is slightly projected away from the wall so that it can oscillate parallel to the wall. So ये ऐसा कुछ oscillate करता रहेगा अपना oscillations में. और ये wall के ऊपर क्या ना एक meter scale attached है. तो meter scale जब attached है, you can even conduct the experiment on a table also. Table का edges में तुम क्या है उस तरह का एक setup रख सकता. So something it is oscillating between. आपको क्या करना होगा, simple pendulum को एक extreme से release करना है, and then wait for a while, and when it reaches, wait for a while to make the oscillation stable, and after that when it reaches one extreme end, put your turn on your stopwatch, and then after, because it is a seconds pendulum, each 1 second में ये यहाँ पहुंचेगा, 1 second, then 2 second, then 3 second, like that. So at any time, instant of time, you have switched on the stopwatch while the bob is at one extreme, and आपको t टाइम के लिए एक कॉलम बनाना होगा. टाइम के लिए कॉलम आपने बनाया, ओके, टाइम के लिए कॉलम आपने बनाया, फिर आप उसका रीडिंग के लिए, एम्पलीट्यूड के लिए एक कॉलम बनाया. एम्पलीट्यूड में आप खाली ये वैल्यू लिखने वाले हैं. तो एम्पलीट्यूड t इज इक्वल टू 0 में मान लीजिए आपको 20 इज द रीडिंग ऑब्टेन्ड ऑन द स्केल. देन फिर आपने वेट किया, 10 सेकंड के बाद आप अगेन 10 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद, बिकॉज ईच 1 सेकंड में ऑसिलेशंस होता है, इधर उधर पहुंचेगा 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड में यहां पहुंचेगा. तो आराम से 10 सेकंड के बाद आप नेक्स्ट रीडिंग ले सकते हैं. मान लीजिए उसमें कोई 18 मिला. Such a way you can go wait for 20 seconds, and obtaining reading you start writing here, and then square those values and plot it on the what we say graph. You will be obtaining an exponentially decreasing relation. अब आपको क्या समझना है इसमें से, नीट एग्जामिनेशन में इसमें से कैसे क्वेश्चंस आ सकता ये डैम्पिंग को लेके. जैसे मान लीजिए एम्पलीट्यूड इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, एन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नोट था, एंड ये t इज इक्वल टू 0 में मान लीजिए एम्पलीट्यूड ए नोट था. किसी एक वक्त में t इज इक्वल टू टाउ में एम्पलीट्यूड बन गया कुछ अल्फा टाइम्स ऑफ ए नॉट. ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड तो बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब अल्फा इज समथिंग विच इज लेस देन 1. सो आप मान सकते हैं कि t इज इक्वल टू एनी n टाउ सेकंड के बाद, इसका मतलब 2 टाउ सेकंड्स के बाद अल्फा ए नोट का अल्फा टाइम्स होगा, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर ए नोट होना चाहिए. 3 टाउ सेकंड्स के बाद अल्फा क्यूब ए नोट होना चाहिए. सो n टाउ सेकंड्स के बाद एम्पलीट्यूड अल्फा टू द पावर n ए नोट होगा. देन ओनली वी कैन से दैट एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. इसका मतलब फॉर एन एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू दैट एम्पलीट्यूड मान लीजिए 10 सेकंड के बाद 2/3 ए नोट हो गया. तो और एक 10 सेकंड के बाद एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, इसका 2/3 टाइम्स होना चाहिए. सो इट विल बी 4/9 ए नोट होना चाहिए. और एक 10 सेकंड के बाद क्या होना चाहिए, और एक 10 सेकंड के बाद इसका 2/3 टाइम्स होना चाहिए, मतलब 8/27 टाइम्स ए नोट होना चाहिए. दिस इज हाउ एम्पलीट्यूड विल बी वेरिंग. सो
इस तरह का एक वेरिएशन को आप क्या समझ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन समझ सकते हैं। तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर एनर्जी ऑल्सो। अगर मान लीजिए शुरुआत में एनर्जी ई नोट था और कोई भी एक टाउ सेकेंड्स के बाद एनर्जी अगर ई नोट बाई 3 हो गया, तो अगेन एक और टाउ सेकेंड्स के बाद एनर्जी क्या है, ई नोट बाई 9 होना चाहिए, और एक और टाउ सेकेंड्स के बाद एनर्जी ई नोट बाई 27 होना चाहिए। सच वे द सेम पैटर्न में एनर्जी भी डिक्रीज होगा, सो वी कॉल इट एज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। दिस इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू नो अबाउट what we say damped oscillation of a simple pendulum. Graph drawing is a practical case. अब आपसे पूछ सकते हैं which of the graph will be true for damped oscillations, then you can easily opt for that one which is exponentially decreasing. All of you know about an exponential curve which we have already seen here, this kind of a variation. This is valid for energy, amplitude and what A square also. So that's all about damped oscillator. Thank you.